फ्रेंड्स, आज हम जाने वाला है काठमांडू के इस एविएशन म्यूजियम में। इस एविएशन म्यूजियम में देखने लायक बहुत ही चीज़ है और ये वीडियो आज बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है क्योंकि इस एविएशन म्यूजियम में एक प्लेन है और इस प्लेन के डॉक्यूमेंट्री भी आप लोगों को इस वीडियो में ही मिल जाएगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। म्यूजियम की ये है मेन गेट और यहाँ पे आप लोगों को टिकट खरीदना पड़ता है। तो टिकट का प्राइस भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कितना प्राइस लेता है। तो हम लोग सिंपली टिकट खरीद लेते हैं। फ्रेंड्स, हम लोगों ने टिकट खरीद लिया है और चलिए इसका प्राइस भी हम आप लोगों को बता देते हैं। और फ्रेंड्स, टिकट का प्राइस कुछ इस तरह का है। एडल्ट लोगों का 250 पड़ जाता है, स्टूडेंट का 125, ओल्ड एज का 125 और साइल स्टूडेंट का सिर्फ 75 पड़ जाता है और फॉरेनर का 500 रुपीज़ पड़ जाता है नेपाली करेंसी में। तो ये है एक बड़ा सा क्रिसमस ट्री और ये है हमारा प्लेन। तो फ्रेंड्स, ये है आप लोगों का प्लेन। इसके अंदर हम लोग आज जाएंगे। तो देखिए कितना बड़ा प्लेन है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को प्लेन के अंदर ले चलते हैं। यहाँ पे सीढ़ी है, सीढ़ी से हम लोगों को ऊपर जाना पड़ेगा। और ये मेरा दोनों फ्रेंड हैं, एक सुमन और एक गौतम। और हम लोग प्लेन के अंदर आ गए हैं। यहाँ पे बहुत सारा सीट है। ये विंडो, यहाँ पे आप लोगों को ये केबिन है। यहाँ पे जो पायलट बैठता है हम भी बैठेंगे, आप लोग भी बैठ सकते हैं, बैठ के तस्वीर खींच सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये क्लॉक है और आप लोगों को देख रहे हैं ये बहुत सारा प्लेन यहाँ पे इसे रखा है। और ये दरवाज़ा है। यहाँ पे बहुत सारा प्लेन इसे अच्छी तरह से सजा के रख दिया है। ये देखिए कितना सारा प्लेन है। और फ्रेंड्स, इस प्लेन के डॉक्यूमेंट्री आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है क्योंकि डॉक्यूमेंट्री जानने से आप लोगों का नॉलेज बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि कैसे इस प्लेन को यहाँ पे लाया, कैसे किसका आइडिया आया कि ये एक म्यूजियम भी बना सकते हैं, तो किसने कहाँ से कैसे ये सब किया, तो डॉक्यूमेंट्री आप इस प्लेन की देख लीजिए। तो ये है प्लेन की डॉक्यूमेंट्री, तो अच्छी तरह से देख लीजिए। His inspiration is former US President John F. Kennedy, who once said, "Ask not what your country can do for you, but what you can do for your country." New York's main airport, JFK, is now named after him. Captain Upreti has flown various aircraft types in his native Nepal, as well as in India, Indonesia, Singapore, Malaysia, Thailand, Oman, Cyprus, Italy, France and the USA, as well as visited over 80 countries. In 2012, he bought a decommissioned Fokker 100 aircraft, transported it in pieces to reassemble it in Dhangadhi in far western Nepal, to set up an aviation museum as a tourist attraction in the region. Museums can be a major draw for visitors around the world. In fact, some destinations can attract millions of tourists just because there is a famous museum located there. This aircraft had only flown for about 8 months and suffered a runway excursion incident at Kathmandu Airport in 2015. It was difficult to extricate the huge plane from the runway and the airport was closed for 4 days. Captain Upreti used to see the aircraft parked at Kathmandu Airport every time he flew in and out, and dreamt one day to acquire the plane to set up a museum in Kathmandu, as well as to serve not just as a tourist attraction, but also educate students about aviation.
Namaste, this is Captain Bed Upreti and I welcome you all to the Aviation Museum inside this Airbus C30-300. We are at an altitude of 4,400 feet above mean sea level and we now begin our journey. You don't need to fasten your seatbelt on this flight, just relax, enjoy the pictures I have taken from the air and under the sea, and you can also take photographs of the aircraft models on display here. There are 7 sections to this aircraft and we are now in the welcome hall where you can watch a short documentary about the origin of this aviation museum. A model of the first ever powered flying machine made by the Wright brothers in 1903, the glass cockpit of an Airbus 330 and the miniature models of planes. This is the Airbus 330 glass cockpit. The captain is on the left and the co-pilot or instructor is on the right seat, and you can see thousands of instruments, and this is the latest cockpit of the latest Airbus 330. In the Air Force Hall, there are models of warplanes as well as replicas of the latest Airbus 380 as well as Boeing 777. There is also a painting of God of the Sky, a Pasquero in this hall. The Airline Hall is next and it has models of airliners from the first ones to the latest aircraft. The Nepal Aviation Hall also has models of planes that have flown in the skies over Nepal, from the Dakotas to the newest Airbus 330 of Nepal Airlines. You can also see a slideshow of rare photographs of aircraft flown in Nepal during 1962 to 1970. The fifth hall is in the tail section of this aircraft, and that is also where the refreshment hall is located, where miniature aircraft models made by Nepali students are also on display. In the lower deck of the plane is the Humra Hall, where you can see a documentary on aviation, and the place is also open for the refresher class and conference. The museum office is located in the Captain Physical Hall. This museum is not only about the past and present, but it is the museum of the future as well. The main goal of this museum is to inspire, encourage and motivate students in their future careers of their interest, and to make a new and an interesting tourist destination in Kathmandu. Your journey in this Airbus 330 Aviation Museum is 100% safe. If you have any queries, please do not hesitate to ask one of our museum attendants. We can also provide suggestions about making this museum more interesting. It took Nepali and international technicians 4 months to cut the plane into smaller pieces and transport it in trucks at night. It took another 9 months to reassemble it here in Sinamangal. This museum is made possible through a partnership between the Bed Upreti Trust and the Civil Aviation Authority of Nepal. The project has been funded by Captain Upreti's own savings, as well as a Rs 27 million loan from Everest Bank. The main objective of the project is to be an educational center to arouse an interest among young Nepalis about aviation and to inspire students to take up careers in one of the world's fastest growing sectors. Grade 9 to 12 students from all over Nepal will be allowed free entrance if they have a letter from their schools, and other students can get a 50% discount
if they come with IDs. Part of the income from the Aviation Museum will go to assist the Bed Upreti Trust, which has been funding treatment for cancer patients from the far west. It will also help the Aircraft Museum in Dhangadhi and the statue of Siddhanath Baba being erected in Mahendranagar. Aviation Museum Kathmandu, with this huge converted aircraft, cockpit and air traffic control recording, its collection of aircraft models from the Wright brothers flying machine to the most modern plane, as well as the photo gallery of aerial photographs of Nepal, are all dedicated to the people of Nepal by Captain Bed Upreti. Finally, I would like to request all Nepalese in Nepal and abroad to devote yourself to lifting our motherland through creative and social activities in any way you can. I wish you a very pleasant visit to our Aviation Museum. Thank you. Namaste. तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों ने इस प्लेन की डॉक्यूमेंट्री देख लिया होगा और आप लोगों को बहुत ही न्यू जानकारी आप लोगों को मिल गया होगा। तो प्लेन के बारे में आप लोग शायद जान गए होंगे। तो देखिए कितना सारा यहाँ पे फाइटर्स एक रखा हुआ है। ये कुछ तस्वीर है, बहुत सारा तस्वीर है यहाँ पे। बहुत ही अच्छा म्यूजियम है ये। अगर आप लोग काठमांडू में रहते हैं या फिर आप नेपाल आए थे तो काठमांडू ज़रूर आइए और इस म्यूजियम में आप लोग ज़रूर देखिए। बहुत ही अच्छा लग जाता है, बहुत ही अच्छा म्यूजियम है ये। इसमें कुछ एलईडी में कुछ चला है, बहुत सारा प्लेन है यहाँ पे और हर एक प्लेन का बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं ये कैमरा में कैप्चर नहीं किया तो इसके लिए सॉरी। हर एक प्लेन के बारे में यहाँ पे डिटेल्स में लिखा हुआ है। ये है एक बड़ा सा प्लेन, नीचे छोटा छोटा प्लेन है और इसमें कुछ जानकारी दिया गया है। आप लोग वीडियो को पॉज करके ये पढ़ भी सकते हैं। तो आप लोग इस म्यूजियम में विजिट करेंगे तो आप लोगों को बहुत ही नॉलेज मिलेगा प्लेन के बारे में, फाइटर के बारे में, क्योंकि हर एक फाइटर, हर एक प्लेन की डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मॉडल यहाँ पे रख दिया है गया है। तो बहुत ही नॉलेज मिल जाता है इस म्यूजियम में। और फ्रेंड्स, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है। इस म्यूजियम के अंदर ही रेस्टोरेंट है। यहाँ पे आप लोग कुछ भी खाना खा सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, पेप्सी पी सकते हैं और भी बहुत सारा यहाँ पे मिलता है। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा एविएशन म्यूजियम के बारे में छोटा सा एक वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगा है तो एक लाइक कर सकते हैं और आपके फैमिली मेम्बर या फिर फ्रेंड्स के साथ ये शेयर भी कर सकते हैं। और इस चैनल में आप लोगों को बहुत सारा वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो मिलने वाला है। तो मेरा इस वीडियो को
देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन भी दबाइए, क्योंकि बेल आइकन दबाना ज़रूरी होता है। जब आप बेल आइकन दबाएंगे और जब मैं आप लोगों को वीडियो दूंगा तो आपकी नोटिफिकेशन में मेरा वीडियो का लिस्ट आ जाएगा, तो पहले आप देख सकते हैं। तो यही था मेरा इस एविएशन म्यूजियम के बारे में। वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।